Okay, so we'll be needing uh, nutshell Captain Subramaniam's book, volume 2 and volume 3, Captain Subramaniam's. Uh, and we'll need MV Hinship, and third one is Hinship particulars. ये तीन चीजें आपको चाहिए स्टेबिलिटी के लिए. रेस्ट नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. एक कैलकुलेटर चाहिए, एक अपना रजिस्टर सेपरेट बना लेना स्टेबिलिटी के लिए, सेपरेट नोट्स, ताकि जो भी हम करेंगे यू कीप डूइंग इट. सब न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पे करूंगा एंड साइमल्टेनियसली मैं आपको टाइम दूंगा कि आप भी साथ साथ करते जाओ. मैं आपसे पूछूंगा, आंसर उसके स्टेप्स मैं बताता रहूंगा एंड यू कीप फॉलोइंग इट योर वे. सो आइडिया इज you are simultaneously doing what I am doing on the board, and I won't go faster than that. I'll always maintain my pace with you in the class. So any step you don't understand, please ask. No issues. Okay. Stability part 2 and part 3, right? That's right. Stability part 2 and part 3. आपके पास शायद नई edition होगी. I think so. Okay, Sir, this part 1 is not required for this phase, right, sir? Part 1 is not required. And questions will come from part 2 and part 3 and Hinship as well. Yeah, that's right. Questions will come from part 2, part 3, and Hinship. Thank you, sir. That will be going on simultaneously along with it. So you will be simultaneously doing it as a part of this thing. I won't announce कि मैं ये part 1 का कर रहा हूँ, but you'll automatically come to know कि मैं कैसे वो second mates का जो syllabus था मैं उसको भी revise करा दूंगा साथ साथ. Okay, sir. So we are following is a monthly module system. That means हम लोग क्या करते हैं, हमने जो आपका पूरा सिलेबस है उसको 3 मंथ्स में तोड़ दिया है. मंथली मॉड्यूल में एक एक मंथ का एक एक मॉड्यूल बना दिया है और ईच मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है दूसरे से. सो एज अ रिजल्ट द टॉपिक्स व्हिच आई विल बी टेलिंग यू नाउ, आई विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस इज मंथ 1 M1 मॉड्यूल. दैट मींस 15 सितंबर टू 14 अक्टूबर तक ये मॉड्यूल चलेगा. तो ऑल ऑफ अस, हम सब ने अपने अपने टॉपिक्स ऐसे ही डिवाइड कर दिए. तो मंथ मॉड्यूल is a watertight compartment. It is segregated from month 2. So it is not connected. So you get time to study, number 1. And in the next months, people who sign off, they can also join in. So every month there will be an inflow and every month there will be an outflow happening. Like you are in your M1 right now. There is nobody before you because सारे के सारे batches निकल गए. So you're starting a fresh cycle, M1. नेक्स्ट मंथ M2 आ जाएगा किसी का. सो आपका M2 होगा, किसी और का M1 होगा, लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो आपके जो टॉपिक्स हैं इस मंथ के व्हिच स्टेबिलिटी में आएंगे, दीज आर द टॉपिक्स दैट आई विल बी डूइंग इन सितंबर मंथ. दैट इज M1 September. These are the topics that I'll be doing with you. So the first big topic that we have will be dry docking, grounding, then trim A. ये second mates का आ गया, ये मैं second mates की revision करा दूंगा. Trim A. You will remember this from your second mates. Then we will be going on to Hinship question number 84. Specifically one question. This is combined list and trim question. ये काफी popular है question, आता है जरूर. So we'll be doing this. And trim table, trimming tables. Hinship. ये 5 टॉपिक हैं जो हम इस मंथ में हम खत्म करेंगे. ये ड्राई डॉकिंग एंड ग्राउंडिंग जो है ये दोनों साथ साथ चलेंगे. ये हम सुब्रमण्यम्स वॉल्यूम 2 से करेंगे, नटशेल वॉल्यूम 2 नटशेल से करेंगे, एंड हिंशिप एंड पास्ट पेपर्स. सुब्रमण्यम वॉल्यूम 2 नटशेल, इधर से हम थ्योरी लेंगे, हिंशिप पे भी जाएंगे एंड पास्ट पेपर्स पे करेंगे. दिस इज हाउ दीज आर द 5 टॉपिक्स हमारे इस मंथ में हम कवर करेंगे. तो हमारी इंटेंशन ये रहेगी कि हम इसको 2 हफ्ते में ख़त्म करें. 3 हफ्ते में हम ख़त्म कर देंगे ये टॉपिक्स, और 1 हफ्ता हम लगाते हैं 4th वीक फॉर MMD के पास्ट पेपर्स करने के लिए एंड रिवीजन. अगर किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ आया है तो उसको दोबारा करा दूंगा अगर कोई डाउट रह जाता है तो. सो 3 वीक्स में टॉपिक्स ख़त्म होते हैं और 1 हफ्ता जो है रिवीजन प्लस पास्ट पेपर्स प्लस MMD क्वेश्चंस प्लस बाउंसर्स, वो 1 हफ्ता लेते हैं. सो 4 वीक्स खत्म हो गए, ये मंथ का शेड्यूल खत्म हो गया. फिर अक्टूबर शेड्यूल शुरू होगा 15 अक्टूबर से. एक नया सेट ऑफ ऐसी टॉपिक्स 5 और होंगे, ऐसे करके 5 बना दिए एंड लाइक दैट हर एक सब्जेक्ट में ऐसा कर दिया. सो दैट इज हाउ वी विल डू इट. ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. सो यू नोटेड इट डाउन? Yes, sir. Already noted. Yes.
All right, let's start with dry docking. So let's make a diagram. So make a diagram like this. Make a table, 3 columns. First column is waterline number. Second column is equation. Third column is inference. So let me know when you're ready. लेवल के बगल नीचे क्या लिखा सर आपने? Meters. Waterline number. Waterline number. Equation. Inference. Okay, sir, we can proceed. Yes. Yeah. Okay. So begins a good 6 months earlier than the actual dry docking. Prior to the actual dry docking, a series of communication happens between the ship and the dry dock, wherein the dry dock wants the ship to enter in a particular condition with a particular trim, with a particular draft, and the ship has to comply with that. So a series of communication happens between them. The reason for that is because the ship has to be stable at all times, and she should have a positive GM through and through. Now, there are 2 types of dry dock. One is called as a graving dock, that is a cemented structure. The other is called as a floating dry dock, where the dry dock itself is a ship, and our ship becomes the cargo of that ship. So we get loaded on board that ship, and therefore the dry dock plus our ship together as a system becomes a floating ship. So that is called as a floating dry dock. So graving dock, floating dry dock. One can go in either one depending on the availability. Now let us say this vessel has to come into a dry dock. The drafts agreed upon are forward 4 meters, aft 5 meters. So trim is 1 meter by stern. Now the blocks in reality are all along the length of the ship, but we are concerned only about the aftmost block and the forwardmost block for stability calculations. इसके बीच में in reality there are blocks in between also. So waterline number 1, we are calling this as waterline number 1. The displacement W1 is acting downward and the buoyancy is B1 acting upward, and the vessel is afloat. The displacement acting downward through the center of gravity, buoyancy, force of buoyancy equal to W displacement acting vertically upward through the center of buoyancy, and therefore the vessel is in stable equilibrium. Vessel is afloat. Trim is 1 meter stern. सर इसको रिपीट करेंगे सर, ये क्या है सर, ये मतलब W1 और ये This is the displacement of the vessel. okay. So अगर मेरा जहाज का displacement 50,000 है तो वो center of gravity के through downward act करेगा, Yes sir. और buoyancy जो है वो upward act करेगा equal to the displacement 50,000 Yes sir. through the center of buoyancy. So W1 acting downward is equal to B1 acting upward. One number is representing the volume, the water line. ठीक है? Is that okay? Yes sir. Is it making sense? सर ये थर्ड कॉलम में से क्या लिखा है, इन्फेरेंस क्या लिखा है, इन्फ्लुएंस, Inference. INFERENCE. इन्फेरेंस. ओके. So what do we infer from this? Trim 1 meter by stern है. Observations क्या है हमारी? It is floating in the water without touching any block. Correct. So trim is 1 meter by stern. अब जब हम enter करें, there was some dock water height
is the height from the top of the blocks to the water line. This is known as dock water height. Top of the blocks say water line tak. Let us say dock water height is 10 meters. So how much is my UKC? 5 meter. Okay. UKC is 5 meter. Now the lock gates are closed. Once the vessel is firmly in position, lock gates बंद कर दिए जाते हैं. And the dry dock begins to pump out the water. तो जब पानी नीचे जाना शुरू करेगा तो ड्राफ्ट क्या होगा? Sir, could you please repeat? Same till the water. अगर तो ड्राफ्ट सेम रहेगा, यूकेसी कम होगा। ड्राफ्ट सेम रहेगा, यूकेसी कम होगा। सो अगर ड्राई डॉक पानी को पंप आउट करना शुरू कर देता है तो पानी नीचे जाना शुरू कर देगा, डॉक वाटर हाइट कम हो जाएगी, यूकेसी कम हो जाएगा, लेकिन ड्राफ्ट सेम रहेगा। डज एवरीबॉडी एग्री ऑन दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, But at certain levels. करेक्ट। जब जैसे शुरू किया उसने, इनिशियली सर जब रिपीट started. करेंगे सर? स्टार्टिंग करी उसने ड्राई डॉक ने पानी को पंप आउट करना, तो लेट अस से 1 मीटर पानी नीचे गया। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी हाँ जी। सर, ये रिपीट करेंगे? ड्राफ्ट सेम रहेगा ये वाला टॉपिक दोबारा? सो अगर मैंने 1 मीटर पानी ड्राई डॉक ने नीचे कर दिया, इफ द डॉक वाटर हाइट इज 9 meters, ओके सर, so if the dock water height is 9 meters, UKC will be 4 meters. ये करेक्ट। Draft कितना होगा? 5. Draft will remain same 5 meter. Drafts will remain the same. Forward will be 4, aft will be 5. That's right. फिर ड्राई डॉक ने और पानी पंप आउट किया और किया, यूकेसी और कम हो गया। एक टाइम आएगा जब यूकेसी 0 हो जाएगा, दैट मींस आफ्ट ने ब्लॉक को टच कर दिया। उस वक्त फॉरवर्ड विल स्टिल हैव सम वे टू गो। Yes, it's about 1 meter. इज दैट करेक्ट? Yes, Yes. sir. उस वक्त फॉरवर्ड विल स्टिल हैव सम वे टू गो। Yes, sir. ओके, उस वक्त डॉक वाटर हाइट क्या होगी? 5 मीटर। 5 meter. उस वक्त डॉक वाटर हाइट 5 मीटर है। आई एम कॉलिंग दैट एज वाटर लाइन नंबर 2। दिस इज वाटर लाइन नंबर 2। वाटर लाइन नीचे आ गई है, आफ्ट ब्लॉक टच कर गया है, फॉरवर्ड ने अभी टच नहीं किया है। ड्राफ्ट क्या है? सेम, That will be same. 4 and 5। डॉक वाटर हाइट क्या है? 5 5 मीटर। meter. यूकेसी क्या है? 0. डू यू ऑल एग्री ऑन दिस स्टेटमेंट? Yes. Yes, sir. किसी को ये चीज समझ sir. नहीं आई? सो इसको हम वाटर लाइन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। W2 डिस्प्लेसमेंट एक्टिंग डाउनवर्ड इज इक्वल टू ब्रावो 2 एक्टिंग अपवर्ड प्लस, अब एक अपथ्रस्ट फोर्स है P जो कि शुरू हो गया एक्ट करना। सो P इज अ अपथ्रस्ट फोर्स which is exerted by the aft block onto the hull of the ship. So it is acting at the stern frame. ये stern frame पे एक्ट करेगा this upthrust force, जहाँ पे aft block ने first contact ship के साथ किया। So since P is a force, it is acting in the same direction as the buoyancy. So उसको मैं एक नाम दे रहा हूँ P2 acting upward। ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है वाटर लाइन 1 पे P1 was 0 बिकॉज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उस वक्त टच ही नहीं किया था उसने। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ sir. एनीबडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड इट, ये वाला पार्ट? So this P will exactly opposite to buoyancy. नॉट ऑपोजिट, इन द सेम डायरेक्शन एज गोइंग। To the center, not center buoyancy. सी द फोर्स ऑफ buoyancy इज B2, It is acting on the stern. दिस इज एक्टिंग ऑन द स्टर्न, जहाँ पे छू रहा है वो। तो अगर ये जहाज है तो ये ब्लॉक है, तो ये इसको छू रहा है, तो ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है। दैट वे, इज दैट ओके? Yes, sir. सर ये इक्वेशन सर आपने जो लिखी है ना W2 इक्वल्स टू लिखा है क्या? इक्वल्स टू या फिर W2 equal to W2 with an arrow downward equal to buoyancy 2 P2, acting हाँ. upward plus P2 acting upward प्लस है? ओके, plus P2 acting upward. So कहने का मतलब ये है वाटर लाइन 2 पे आफ्ट पहली बार शिप को टच कर ब्लॉक को टच करता है। सो वाटर लाइन 2 को हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड commences. Critical period has commenced. Means as soon as the upthrust force start acting on the stern, the movements becomes critical period. Correct. Absolutely right. The critical period has commenced. Is this okay? So when does critical period commence? When aft has touched the block for the first time. Bottom of the dry dock. When aft has touched the block for the first time. Critical period has commenced. अब इसके बाद जो भी होगा, ये जैसे जैसे वाटर लाइन नीचे गिरेगी वैसे वैसे ये P बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे P बढ़ेगा ये जहाज की ये ट्रिम जो है इवन कील की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। आर यू विद मी? Yes, sir. ओके, सो दैट मींस वाटर लाइन 2 के बाद ट्रिम विल बी लेस देन इक्वल टू 1 मीटर। अब 1 मीटर से कमती होनी शुरू हो जाएगी। डू यू एग्री ऑन दिस? Yes, sir. Yes. Yes. सो अगर सपोजिंग मेरा जहाज
अच्छा, जैसे जैसे नीचे जाएगी वाटर लाइन वैसे वैसे बॉयंसी कम होती जाएगी, हाँ सर, बॉयंसी कम होती जाएगी P बढ़ता जाएगा. राइट सर, और टोटल जो ग्रैंड टोटल है वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा जो कि कांस्टेंट है। राइट, कैसे रहेगा? एक बार एक्सप्लेन करेंगे ग्रैंड टोटल. भाई अगर मेरा जहाज 50,000 टनर है तो मेरे जहाज की डिस्प्लेसमेंट तो 50,000 ही रहने वाली है ना। डिस्प्लेसमेंट मिलने वाली है. तो इक्वेशन नंबर 1 में 50,000 was equal to 50,000, इक्वेशन नंबर 2 में 50,000 is equal to 40,000 plus let's say 10,000, इक्वेशन नंबर 3 अभी आगे आएगा, what 50,000 is equal to 30,000 plus 20,000, मतलब ये डाउन जा रहा है, ये अप जा रहा है, तो buoyancy reduce हो रहा है धीरे धीरे because it will initially come to zero later on. राइट। और सर buoyancy रिड्यूस होने का वजह जो है कि बिकॉज ऑफ इट टचेस द ब्लॉक। तो buoyancy रिड्यूस होने का वजह इसलिए है क्योंकि मेरी अंडर वाटर वॉल्यूम कम हो रही है, पानी निकाल रहे हैं हम. मैं पानी को निकाल रहा हूँ ना ड्राई डॉक का, मतलब ड्राई डॉक निकाल रहा है, मैं नहीं निकाल रहा, सॉरी Yeah. ड्राई डॉक निकाल रहा है, पानी निकलता जा रहा है तो मेरी अंडर वाटर वॉल्यूम भी कम होती जा रही है, यस, buoyancy कम हो रही है, लेकिन वो कॉम्पेंसेट हो रहा है पी से, पी बढ़ता जा रहा है। या So dry docking is a slow progression of transfer of weight of the ship to the block, slowly in a gradual manner. Originally, the entire weight of the ship was taken over by the water. Now, gradually, the ship is transferring the weight onto the blocks in a slow manner by reducing the level of the water. Is that okay? यस, So, waterline 2 critical period has commenced. अब ड्राई डॉक पंप आउट करता है, फिर आता है वाटरलाइन नंबर 3। अब जैसे जैसे ये डाउन जाएगा पानी, जहाज डाउन जा रहा है तो नेक्स्ट ब्लॉक टच करेगा, फिर नेक्स्ट करेगा, फिर नेक्स्ट करेगा, और एक टाइम आएगा जब फॉरवर्ड विल टच द ब्लॉक फॉर द फर्स्ट टाइम। एग्रीड? यस सर, सो वाटरलाइन नंबर 2 में मेरा यूकेसी था 0, माय इनिशियल ड्राफ्ट आफ्ट वाज इक्वल टू डॉक वाटर हाइट राइट सर, एट नंबर 2, at what number 2 was equal to, let's say, 5 meters. Do you agree to this statement? यस सर, Okay. Initial draft aft is equal to the dock water height is equal to the 5 meters, let's say. अब मैं आ गया waterline number 3 पे, अब मेरा आगे भी टच कर गया बाव, यूकेसी अब मेरा 0 ही चल रहा है, so अब मैं waterline number 3 पे आ गया, ये आ गया waterline number 3, ये waterline number 3. Okay, so W3 acting downward is equal to buoyancy 3 acting upward plus P3 acting upward. What is the trim at this stage? 0, Everybody agrees on it? 0, Okay. What will be the UKC at this stage? सर 0, All right. The draft forward will be equal to draft aft. Do you agree on this? Yes, sir. Okay. This will be equal to dock water height at this stage. Do you agree on this? Yes, sir. Okay. This will be equal to the hydrostatic draft at this stage. Do you agree to this stage? Draft Yes, sir. forward. Because मेरी trim 0 है, तो मैं even keel हूँ। अगर मैं even keel हूँ तो forward draft will be equal to aft draft, will be equal to the dock water height, will be equal to the hydrostatic draft. कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से मैं कोई भी एक चीज निकाल लूं तो मुझे बाकी चारों चीजें मिल गई। हाँ सर, Sir, what is the last one? हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट सर इस टाइम पे ड्राफ्ट 4 मीटर है ना? नहीं, इस वक्त ड्राफ्ट नहीं, इस वक्त ड्राफ्ट जो है 4 से ज्यादा होगा। अब क्यों ज्यादा होगा वगैरह वो सब मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर में, बट 4 नहीं होगा, अच्छा 4 नहीं होगा सर इसमें डेक्लिविटी को कंसीडर नहीं करेंगे? अभी। वो तो डेक्लिविटी तो लाओ ही मत, अभी कुछ भी मत करो, वो बहुत आगे चला जा गया है। डेक्लिविटी मैं लास्ट में करूंगा। डोंट ब्रिंग डेक्लिविटी इनटू द पिक्चर एट ऑल। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द हाइट्स ऑफ द ब्लॉक्स आर द सेम। ठीक है, यू आर सेइंग कि ड्राफ्ट 4 मीटर हुआ कि नहीं? वेल ड्राफ्ट जो है सी 2 चीजें हो रही हैं, एक तो पानी नीचे जा रहा है और एक जहाज की ट्रिम चेंज हो रही है, तो और एक मीन राइज भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द पंपिंग आउट। The ship is bodily rising with respect to the water, and एक TF change in trim forward वो प्लस भी हो रहा है साथ में, तो the draft will not be 4 meters but it will be 4 plus something। अभी क्या है something, we'll come to that shortly। ठीक है, is that okay? ओके सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Okay, this waterline 3 is known as the when the bow is about to touch the block forward is known as critical instant। The instant at which the bow is about to touch the block forward is known as critical instant. And the moment
the bow has touched down, its critical period ends. So critical instant and critical period ending happens at the same time, all at waterline number 3. But there is a technical difference between the two. The critical instant is a split second before critical period ending. How do you define critical instant? It is the instant at which the bow is about to touch the block, and the moment the touchdown happens, critical period has ended. ये समझ में आया? So that means the critical period will be there till the time bow touches. Absolutely. It doesn't matter whether it start touching the other blocks, right? At the end and on the stern it touches the first block, then gradually it start touching the another block before touching the forward one. Till that time also the critical period is there. Correct. So critical period, how do we define? It is the time period, it is the period from which when the aft touches the block for the first time to the forward touching the block is known as critical period. That means from waterline 2 to waterline 3. Okay? Is that okay? ये critical instant and critical period difference समझ आ गया? हाँ सर. Yes, sir. Anybody has any questions on this? तो इन दोनों का difference भी पता चल गया? Instant is a split second before critical period ending. Both are happening at waterline number 3. Okay. This critical period end and critical instant at the same time, or be just about when it touches the bow, first block? See, critical instant occurs a split second before critical period ending. Both are occurring at waterline number 3. Trim is 0 at that time in both the cases. The only technical difference is critical instant is when the bow is about to touch. Critical period ending is when the bow has touched. ये फर्क है. Thank you. हाँ जी. Is this okay? इसके बाद ड्राई डॉक फिर पंप आउट करता है पानी को, और एक वाटर लाइन आती है वाटर लाइन नंबर 4, और फिर एक आ जाती है वाटर लाइन नंबर 5. वाटर लाइन नंबर 4 W4 इज इक्वल टू ब्रावो 4 प्लस पापा 4. अच्छा, W3 में मैं वाटर लाइन 3 में एक चीज लिखना भूल गया. ब्रावो 3 इज लेस देन ब्रावो 2. पापा 3 इज ग्रेटर देन पापा 2. W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3. यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स कांस्टेंट. ब्रावो इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, पापा इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग बाय द सेम डिफरेंशियल. W4 is equal to Bravo 4 plus Papa 4. This is waterline number 4. Inference में आएगा trim is 0 at that stage. Bravo 4 is less than Bravo 3. Papa 4 is greater than Papa 3. And W3 is equal to W4. Draft forward is equal to draft aft is equal to dock water height is equal to hydrostatic draft. This is waterline number 4. Waterline number 4 का significance क्या है मैं अभी बाद में बताऊंगा. अभी मैं खाली इक्वेशन लिख रहा हूँ. This is waterline number 4 and waterline number 5. W5 is equal to buoyancy 5 which has become 0 plus Papa 5 which is at the maximum. So at waterline 5, when the dock water is at the keel level, buoyancy is 0, Papa is maximum, draft is 0. Draft forward is equal to draft aft is equal to 0. So the whole process of dry docking is buoyancy starting at 50,000 becoming 0, P starting at 0 becoming 50,000. That is the whole process of dry docking. तो ये B5 equals to 0 है ना? B5 is 0. B 0 हाँ. 0 हो गया because there is no buoyancy now. कोई underwater Yes. volume बची नहीं. So basically the dry docking is all about a sequence from going from 1 to 5. We go in this sequential manner. W4 and W5 में this direction will be not, or it will be the same as before? Directions will be the same as before जो पहले चल रही थी Okay. वो same चल रही In 5 as well. हाँ. So they are all, W's are all acting downward, left hand sides are all acting downward, right hand sides are all acting upward. Any questions so far? Okay. Now after waterline 2 is achieved, that is critical period has commenced. तो मेरी मम्मी ऐसे दूल्हे ले लेके आ जाती है. The देखो बेटा देखो कितना right off सुंदर है ये. mute. ये कच्चा है. इसको थोड़ा पका के Bharat, लेके आओ. please put yourself on mute. ऐसे अच्छा लग रहा है. मैं मोमोज टाइप पत्ती लेके सड़कों पे घूम रही हूँ और मेरी मम्मी चाहती है कि मेरी शादी हो जाए. तो मेरी मम्मी ऐसे दूल्हे ले लेके आ जाती है कि देखो बेटा देखो कितना सुंदर है ये. Okay. Now a question: why does dry dock stop pumping out water after waterline 2? Dry dock जो है ये waterline 2 के बाद, that means जब critical period चालू होता है उसके बाद थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए pumping out
पानी का डॉक वाटर को पंप आउट करना बंद कर देता है. Does anybody have any answer why? So we will check that the ship has the GM, sufficient GM, because now the critical period is about to start. GM और वो सब तो पहले कैलकुलेट हो चुका है. अब तो कोई कैलकुलेशन दोबारा करते ही नहीं है, करने का टाइम भी नहीं है हमारे पास. We are already into it now. So checking of a GM is not done at this stage. तो Anything ब्लॉक else? मतलब in line है कि नहीं है? Center हाँ, line is line. बिल्कुल ठीक. हाँ, so alignment, to check the alignment of the vessel with respect to the blocks. बिल्कुल ठीक है. Alignment चेक होती है. और क्या चेक होता है? जैसे alignment में और क्या चेक करते हैं? Under water obstructions चेक करते हैं. Underwater obstruction, bottom plugs positions. क्या है वो सब? Bottom plugs, sea chest, overboard discharges, anodes, Doppler log, echo sounder, transducer. और क्या? What else is there? Underwater obstructions में क्या क्या है और? Bow thrusters. So ये सारी चीजें चेक होती हैं. और क्या चेक होता है? Any other sections and overboards. Absolutely right. Any other sections या फिर अगर कोई प्लेट्स को क्रॉप एंड रिन्यू करना है. Any plates which need to be cropped and renewed. किसी कोई सेक्शन को काटने के लिए आप आए हो, वो चेक होता है. और इस वक्त अंडर वाटर CCTV रिकॉर्डिंग ली जाती है हल की फॉर एनी डिफॉर्मेशन, एंड दिस कुड बी डन यूजिंग डाइवर्स, स्कूबास, ROVs, सबमर्सिबल्स, submarines, submersibles, or remote operated vehicles, or scubas, or divers, or underwater CCTVs, depending on the technology which is used. So recordings of the bottom hull are taken so that सर ये पॉइंट 2 में फर्स्ट वर्ड क्या है? underwater obstruction. सर ये CNR और ये ROV क्या लिखा है? Crop and renew. Any plates which need to be cropped and renewed. Cropped and renewed. Yeah. Any plates which need to be cropped and renewed. सर ये नंबर 2 रिपीट कर देंगे सर, पूरा क्या क्या है? Underwater obstructions, bottom plugs, sea chest, overboard discharges, anodes, Doppler log, echo sounder, bow thruster, and any plates which need cropping and renewing. जिसके लिए आप अंदर डॉक में घुसे थे. सर ये फर्स्ट पॉइंट में जो ये भी सर डाइवर्स ही करेंगे सर? नहीं, ये दिस इज डन बेसिकली फिजिकल अलाइनमेंट चेक होती है, पोर्ट टू स्टारबोर्ड अलाइनमेंट बेसिकली. तो डॉक अपनी लाइन देता है, अपनी डॉक वायर देता है, एंड उससे वो अलाइनमेंट को चेक करता है. तो ये डॉक मास्टर करता है. ओके सर. सो ये नंबर 2 के पॉइंट्स जो है बॉटम प्लग्स, सी चेस्ट एंड ऑल, ये पंपिंग को रोक के करने का क्या फंडा है सर? भाई आपका डॉक में आ गया, ऐसे बैठ ही चुका है जी सर. अब नीचे में ब्लॉक्स तो ऑलरेडी पहले से रखे हुए थे ना. हाँ सर. तो अब चेक करना की जरूरत है कि ये ना हो ना कि अगर अब जहाज बैठ गया उसके बाद तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं. इस स्टेज पे अगर जहाज को पोर्ट स्टारबोर्ड अलाइनमेंट करनी है या ब्लॉक्स को शिफ्ट करना है अंडर वाटर, तो ड्राई डॉक करेगा ना ये सारे काम. ओके सर, मतलब ये पॉइंट्स उन ब्लॉक्स पे रेस्ट ना करे या टच ना करे वैसे वाले. बिल्कुल ठीक. ओके सर. बाकी डॉकिंग प्लान एंड लोकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर और पहले भेज देते हैं हम लोग सब कुछ. ये सारा GA प्लान, डॉकिंग प्लान, सारा कुछ पहले जा चुका होता है. जस्ट टू कंफर्म दैट ऑल एज पर आवर प्लान, राइट सर? कम अगेन. Just to confirm that all sitting as per our plan. The ship is sitting on the block. Correct. To confirm that the ship is sitting as per on the blocks as per the plan. That is why. ठीक है? Is that okay? Thank you. जी नंबर 3 का लास्ट पॉइंट क्या लिखा है आपने? Underwater CCTV, divers, scuba, and remote operated vehicles or vessels. Okay, thank you. Remote operated vessels. स्कूबा क्या है? Scuba divers होते हैं ना. Scuba underwater you have the submarines also scuba. You have the divers also scuba. Okay sir. And the remote operated vehicle. तो ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है कि उस ड्राई डॉक की क्या क्या टेक्नोलॉजीज उनके पास है. तो जब ये सब चेक हो जाता है उसके बाद ड्राई डॉक फिर से पानी चालू. ये इसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं इस सारे कार्यक्रम में. दिस टेक्स अबाउट 4 hours. एंड उसके बाद ड्राई डॉक फिर रिज्यूम करता है पंप आउट, और फिर वाटर लाइन नंबर 3 पे जाता है, और फिर ये सिचुएशन आती है. फिर उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 5 आती है. ठीक है? इज दैट ओके? Yes sir. Okay, so let us stop here, and I want you to go through Nutshell series, Captain Subramaniam's book, and है नहीं.
बुक नहीं है आपके पास, किसी के पास भी नहीं है, तो सीरीज 3 का पीडीएफ मिल गया सर ऑनलाइन, तो लेकिन अब आपको क्या है कि अब दो तीन चीज़ें करनी है आपको। एक तो ये दो ऐप डाउनलोड कर लो पहले, दो तीन ऐप। ओके, ये एक तो ऐप ये है, एक तो ऐप है ये एमएमडी एग्जाम का करके ऐप है। ओके, एक तो इसको डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, फ्रीली डाउनलोडेबल है। दिस विल गिव यू ऑल पास्ट एमएमडी एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वंस। ये आपको सारे के सारे एग्जाम पेपर्स दे देगा। कितने साल तक देगा ये? लास्ट 10 ईयर्स? हाँ दे देता है, ये 8 9 10 साल के दे देता है आपको ये। तो ये बड़ा अच्छा ऐप है। एंड सो एक तो ये डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल पे, ठीक है, ये लेटेस्ट वन। और एक है ये मैरिनर्स ऐप, ये आई थिंक सबके पास होगा जैसे ऑलरेडी, बिकॉज ये प्रीसी डेज से मैं सबको बोलता जा रहा हूँ कि लेकर रो। ये बेसिकली आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देता है, मेडिकल कहाँ होते हैं, सी टाइम कैलकुलेटर, वो सब चीज़ें हैं इसमें, ये जनरल इन्फो है। और एक ये है, गो टू दिस वेबसाइट कॉल्ड मेरीनपीडिया, एंड यहाँ से आपको सारी किताबें मिल जाएंगी पीडीएफ में। सो पीडीएफ सारी मीडिया लिखा है सर? मेरीनपीडिया, तो इसमें Okay. आपको जितनी भी किताबें हैं ना सारी की सारी पीडीएफ में सब मिल जाएंगी, मेजॉरिटी। सर ये साइट है ऐप? ये साइट है, ये साइट है। तो मेरीनपीडिया में चले जाना, पीडीएफ की सारी बुक्स को डाउनलोड कर लेना जो भी चाहिए। और जो ना मिले तो वो इसमें चले जाना, पीडीएफ ड्राइव, ये भी ये वेबसाइट है पीडीएफ ड्राइव करके, तो वो उसमें मिल जाएंगी। अगर वो वहाँ नहीं मिली तो यहाँ मिल जाएगी। ये दो बुक्स के लिए हैं, ये दो बुक्स के लिए हैं पीडीएफ ड्राइव सर। पीडीएफ ड्राइव। तो गूगल में टाइप कर देना पीडीएफ ड्राइव एंड देन इट विल लीड यू देयर। एंड ये हो गया। और कुछ बताना था, और एक वो हम आपको ये भेज देंगे ग्रुप में, ई मैरिनर्स, ये बुक सप्लायर है, नोट सप्लायर, बुक सप्लायर, ई मैरिनर्स। इसका मोबाइल नंबर शेयर कर लेंगे आपके साथ ग्रुप में, आई थिंक शेयर कर दिया है शायद ऑलरेडी, पता नहीं मुझे, आ गया सर। आ गया। तो इससे आप सारे के सारे अपने चार्ट्स मंगाने हैं, पैरेलल अगर किसी को चाहिए, डिवाइडर चाहिए, एडमिरल्टी टाइट टेबल चाहिए, ये सब चीज़ें मंगा लेना उससे, एक सेट पूरा। तो ही इज डूइंग अ गुड जॉब आई फील, ई मैरिनर। एंड सर एक बार वो बोर्ड दिखाएंगे, वाइट हाँ जी, बोर्ड्स में उसका नाम लिखा हुआ है। हाँ, ही इज अ सप्लायर, ये ई मैरिनर, इसका मोबाइल नंबर ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। So this PDF drive is website, right, sir? Correct. All these both these are websites. Good. Both these are websites. So इस पे आपको सॉफ्ट में मिल जाएंगी किताबें। So basically this will take care of all your requirements. ठीक है? So go to Nutshell Volume 2, Dry Docking Chapter. Okay, I want you to read in the theory part of it. Dry docking का जो theory part है ना, just I want you to read the theory. This is chapter number 31 of my book. Chapter number 31, dry docking. I just want you to read only the theory. No numericals to be done. Numericals सारे मैं क्लास में दूंगा करने को, वो सब क्लास में करेंगे, इससे कुछ नहीं करेंगे हम सीधा पास्ट पेपर्स में जाएंगे। चैप्टर 31 की सारी थ्योरी बननी है सर। हाँ, चैप्टर 31 की थ्योरी है अबाउट 4-5 पेज की, उसको एक बारी पढ़ लेना प्लीज, ठीक है, सो दैट टुमारो व्हेन वी टेक द क्लास यू आर एटलीस्ट ये रिफ्रेश हो जाएगा जितना भी हमने किया है। वाटर लाइन 1 to 5, उसमें वाटर लाइन का नंबर नहीं मेंशन्ड होगा, ये दिस इज फॉर आवर रेफरेंसिंग। अपनी स्टेबिलिटी की सेकंड पार्ट में पेज 31। करेक्ट, चैप्टर 31। ओके चैप्टर 31। तो प्लीज रीड दीज 4-5 पेजेस थ्योरी, ताकि ये सारा रिवाइज कर लेना जितना भी अभी ने आज किया है। जस्ट डू अ रिवीजन ऑफ दैट। ओके, ऑलराइट, चलो, सी यू, बाय। Next class is going to be at 3:45. Thank you, sir. Okay. Bye. Thank you, sir. Yeah, 4:45 you'll be ending up for the day. हेलो excuse me sir. Yes, please. सर दिस इज अंशु। इन मॉर्निंग में शायद से मेरा एक्सेस नहीं हो पा रहा था, तो मेरा अटेंडेंस का नहीं हो पा रहा था। Okay, done. I'll inform Vandana. She'll take care of that. ओके, थैंक यू वेरी मच। Yeah. Okay. Bye. See you. भाई आफ्टरनून में अटेंडेंस कब हुआ?
Good afternoon, everybody. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. Any doubts from yesterday's class? Go ahead. Sir, at this, we were discussing about this water lines, and water line number 2, I have a doubt little bit. Trim should be in this condition when the stern frame has touched the block 1 meter or less than equal to, sir? I have a doubt here. So it will be 1 meter initially when the touchdown happens. So if the touchdown occurs, the moment the touchdown happens, at that point in time, the trim will be 1 meter. Oh, okay, sir. And subsequent to that, the trim will start to reduce because the P will start to increase. Yes, sir. Here we have written less than equal to 1 meter, sitting down further. Correct. The vessel will start sitting down. Correct. That's what I wanted to indicate. Okay, touchdown पे 1 meter और उसके Yes, sir. subsequently as the pani will start receding, P is going to push this vessel up like this. Yeah, okay, sir. Sir, steadily increasing virtual loss of GM, is compensated by the side shores. So it will be only virtual loss, not the actual loss. I'll be talking about the word now. That is a part of my lecture now. I've discussed that point with you as yet. So I'll be discussing that particular point now. Okay, sir. And the displacement, I was having doubt because technically the definition of displacement is the underwater water displaced by the ship. Commonly, we also say the weight of the ship. So here we are referring to the weight of the ship. That is right, sir. We're talking Because about the weight of the ship. weight of the ship. Yeah. Oh, See, it's like, you know what? My weight is 80 kilo, yeah. right? Yes, sir. Right. So when I'm walking on the earth, I am weighing 80 kilos, right? Yes. Now I put myself into a swimming pool. Yes. My weight is still 80 kilos. Now I put my feet on the floor of the swimming pool. Yes, sir. Now my 80 kilos is being shared between the underwater volume, which might be 60, Yeah. and 20 Yes. might be the upthrust exerted by the base of the swimming pool onto me, on my legs. Yeah. So But I was 80 just discussing so about 80 this. will be equal to 60 plus 20. You know, that kind of a thing. Yeah, that is right, sir. That is well understood. But I was just, I read this definition that is saying that only underwater displacement. Commonly, we are also referring to as weight of the ship. Okay. So basically, what we call it as. So that is the weight of the ship displaced to water, no, sir? Correct. That is the weight of the ship, which is equal to the weight of the water displaced. Displacement, yes, sir. Yeah, So they're equal. And which we when the also- ship is also- floating freely. When the ship is floating freely. Yes. So, but Okay, if sir. the This is ship understood. al- This we are if referring to the ship weight is also- only. Yeah. And so there's one question regarding this upthrust force P. So we said that it is be acting exactly on the stern when it touching the aft block initially. So when the ship is coming towards from aft to forward, so P will be also coming towards forward. Okay. All right. This point I could not touch yesterday. So basically, what will happen is initially the P is acting only at the aft perpendicular, but as the trim keeps changing, the next block will touch. Now the P is getting shared by all the blocks in contact. Okay, sir. It So keeps when getting the shared. And so when finally, when I okay, land up at when I land up at waterline number 3, all the blocks will be touching. So P3 is the sum total of all the blocks. So it's not possible for me on the ship to calculate the P of each block. वो मेरे पास उसका कोई औजार नहीं है. I don't have any means. So what is done for stability calculations is the entire P3 is assumed to act at aft perpendicular. In reality, it is being shared by all the blocks. okay, This is sir. for When it is, calculation, sir. so when it is sitting, all the blocks still be considered on the aft side. That's right. The value is P3 is the P being exerted, the sum total of all the blocks shared. That sum total is P3, assumed to act at aft perpendicular only. In reality, acting all along this thing. Is it okay? I have a doubt. Yesterday, sir, we have discussed like W1 is equal to W2. Correct? Yeah, go ahead. Yes, sir. And as per sir, the chapter 31.3, it is written like to calculate P is equal to W2 minus W1. It is saying like this having a different displacement. Hold it. इसीलिए मैं अभी आगे भागना नहीं चाहता हूँ. Just hold it there. अभी we have not yet started with you the numericals. Just hold it there. Okay, I'll
clarify this bit. In सर आपने reality, वो क्यूरी वाला पोर्शन फर्स्ट 2 पेजेस. हाँ. So Sir, I have a doubt related to. So what I have taught you is W1 is equal to W2 is equal to W3 is equal to W4 is equal to W5. W remains constant all the time. Yes, sir. This is what I have taught you. Buoyancy Yes, sir. will start at 50,000, will become 0 finally. Yes, sir. P will start at 0, will become 50,000 finally. Yes. ठीक है? Yes, sir. Understood. Sir, that means यहाँ पर. P will be keep on increasing till the forward bow block touches, and then it will get equally distributed. Because it is written here, the value of P at the stern frame increases as the water level drops until the bow takes the load. No. Thereafter, P No, acts along the entire No. keel. This is a different kind of a statement. Try to understand. As the trim keeps changing, so the P is going to be continuously सारे blocks आते जाएंगे बारी बारी करके, and P share होता रहेगा, तो P maximum पे चला जाएगा. Ship is already setting all the blocks. So the ship's keel or still only the stern frame? It is all along the keel. Along the keel. So if Along the anybody keel. asking like, so if it's like if it is sitting on the complete block, so it is acting along the keel, or if it is touching the aft block only, so it is at the stern frame. Correct. So when it is sitting all over on the blocks, then it is all along the keel. The P is acting. Okay, thank you, sir. Any other doubt? Nothing. So now, somebody had talked about shores. So let me just do that bit. ये shores क्या होता है? So basically, what happens is, if this be an athwart ship, look of the vessel, okay? This is an athwart ship. The actual vessel is going forward, like this. This is the actual vessel, which is going forward. Excuse me, sir. I'm not able to see the camera, sir. You're not able to see the camera? What about the others? So I just got logged out for 2 minutes. So visible, sir. Logged in again. Visible. If you can't see my camera, what you can just do is just leave and then log in again. दोबारा. Okay, sir. Just try that. I also just logged out and logged in again, so now it's working fine. Yeah. Yes, it is now visible, sir. Okay. All right. So, if this be the athwartship look of the vessel is lengthwise like that, then this is your center, the keel blocks as they're called. Okay, they're called as the keel blocks. So ये पूरी की पूरी pull along, they'll go along the length, right? Then you have side blocks. ये side blocks हो जाते हैं, okay? Because अब हमारे जहाज की बीम ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिर then you have what is called as bilge blocks. So keel block, side blocks, bilge blocks. ये bilge keel की तरफ जब curvature आता है bilge keel का, तो ये उधर वाले जो outermost होते हैं, they are called as the bilge blocks. Now These are also along the ship's length. these are all along the length of the ship. ये ऐसे चल रहे हैं पूरे के पूरे. They are all going along the length. Right? It depends on the beam of the vessel. अगर beam छोटी है, तो then side blocks की जरूरत नहीं पड़ेगी. But अगर beam ज़्यादा है, तो naturally ये और increase होते रहेंगे side blocks. So that depends totally on the size of the vessel. अच्छा. अब क्या होता है कि because ये P ऐसे act कर रहा है, तो there will be a tendency of the vessel to bulge out like this. There will be a tendency because ये ऐसे push कर रहा है जहाज को, तो there will be a tendency for the vessel to bulge out like this. So in order to prevent that, okay, bulging out, so what the older vessels, general cargo and all that, they used to be V-shaped vessels, not a regular box, but they used to be a V-shaped. The vessels were shaped like this. So if this vessel was shaped like V-shaped and she would sit like this, so consequently, when she sat down, or when she touched waterline 2, these planks of wood were wedged on the side. These were planks of wood wedged on the sides. So by the dry dock. So यहाँ पे dock side है, यहाँ पे ship side है. इसमें ये wedge मार दिया जहाज को. तो wedge कर दिया. These were called as shores. Similarly, these shores were wedged here also.
So they would do two functions. One, they would wedge the vessel so as to prevent the toppling over. Two, they would prevent the bulging out of the vessel or the what is it called as? The bulging out of the plating, the shell plating. So what is So that topping? topple over, कि ऐसे topple ना कर जाए, ये जहाज कहीं गिर ना जाए ऐसे. These vessels are susceptible to that, but these vessels are not in the 80s and 90s. And some of the primitive dry docks, they are still doing that. But advanced dry docks, obviously, today we don't have all this shoring business. तो सर अभी क्या करते हैं जो एडवांस वाले हैं? अभी इसकी जरूरत ही नहीं है, आजकल ये करते ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती आजकल, बिकॉज एक तो ये वी शेप्ड वेसल्स ही नहीं है अब इतने ज्यादा, ये तो है ही नहीं, ये तो गायब हो गए. अब बॉक्स शेप्ड ही हैं सारे वेसल्स जो भी हैं. So by the blocks itself, you just increase the number of blocks, that's all. So in today's time, this is not done. But yes, you should know what shorings are, because orals में पूछ लेते हैं. How do we prevent this bulging in the box-shaped vessels? I'm sorry, I couldn't get you. How do we prevent bulging in these box-shaped vessels? Bulging out of hull plates. No, you cannot do anything. Extra paddings on top of these blocks. So Teflon paddings are put up, rubber paddings, highly reinforced rubber paddings are put up over here. So they take care of that bulging out. So you can't do anything. Vessels used to dry dock for a very long period of time. You know, एक बारी dry dock में जाता था जहाज, तो 3-4 महीने के लिए जाता था. You know, the dry docks were not so efficient as today. So having a prolonged stay in dry dock on the blocks, then she is more susceptible for this bulging out. But today our dry docks are minimized. Bulk of the job is done at the repair berth, which is floating. So first we go to the repair jetty. The work there starts, and the engines are opened up, the units are opened up, and we go into the dry dock only for the underwater portion, nothing else. So in reality, the dry dock stay might be just 10 days or 12 days. The shipyard stay, the repair berth stay, might be 15 to 18 days. For the repair, in totality, becomes about a month. So as a result, the bulging is less. The vessel is exposed less period on the blocks. That is the situation today. Okay, sir. Okay. So that was that with regards to the shoring. Okay, now let us start. Which waterline is this? What number shall I give it? Waterline 1. This one is number 3, sir. Number 3, touching both, no? Number 3. Does everybody agree on that? This cannot be 1. It cannot be 2 also. Agreed? Yes, sir. This is 3. That means इससे पहले number 2 हो चुकी है और उससे पहले number 1 हो चुकी है. So 1 से मैं 2 पे आया, 2 से मैं 3 पे आया. Okay? So now let me touch upon one more element of the ship, of the stability, and that is GM. So let's say that at waterline number 1, let's say the km of the vessel is 6 meters, the kg of the vessel is 5 meters. Okay, therefore the GM initial is 1 meter. Yes. So at waterline 1, under the column of inference, write down GM initial is equal to 1 meter. ये मैं hypothetically values ले, I'm just randomly taking some values to explain a point. Now, when I come to waterline number 2, okay, P will start to act. Will there be any change in the GM of the vessel? Is the question. What do you think? Sir, repeat, sir, please. Yes, sir. What I'm saying is, at waterline 2, when P begins to act, Offside touches the block. The kg will change, so GM will affect. now the question is like this. In reality, the kg of the vessel does not change. Okay? In reality, the kg of the vessel does not change. Because the displacement of the vessel is 50,000 tons. Still, if the displacement is constant, then kg is also constant. Yes, sir. It will be constant. That is Right. correct, sir. Buoyancy will reduce and Buoyancy will Right. increase. Because we have Buoyancy is loaded reduced. any cargo. Because I have not
discharged any cargo. The two basic principles in dry dock is W remains constant, kg remains constant. Okay. Now what happens is this P tons of force which is acting upward is changing the trim of the vessel. And since the trim is changing, the waterline is changing. Earlier the waterline was inclined like this. Now the waterline is slowly becoming less inclined and coming to even keel. So as a result, I know Km is also equal to Kb plus Bm. So my waterline is changing, so Kb is changing, Bm is also changing, so Km is changing. If Km is changing, Kg remaining constant, that means Gm is changing and Gm is reducing. Yes, sir, correct. Okay. Sir, please repeat again, sir. I'll repeat once again. Km is also equal to Kb plus Bm. My waterline is changing. My waterline was initially inclined like this. Initially मेरी जहाज ऐसे था हो रहा है. तो क्योंकि मेरा जहाज ऐसे हो रहा है, Kg कांस्टेंट है, तो मेरा Gm बदल रहा है. मेरा Gm. Excuse me, sir. Let me just finish the sentence. So because my Km is changing, my Gm is also changing because of that. Kg is constant. So because मेरा Gm change हो रहा है, ये मेरा Gm actually reduce कर. This reduction of Gm is called as virtual loss of Gm. And so therefore from waterline number 2 onwards, when critical period commences, virtual loss of GM commences. Hanji, now you ask me question. Why the kg is constant? At the aft edge of ship touch, it will slowly coming down towards the forward block. So there is a G shift over now aft say toward the center. What is kg by definition? What is G? G is the center of gravity. Right. By definition, it is called as the geometric center of the mass or weight of the vessel. I have not changed any mass distribution of the vessel. अगर मेरा जहाज का ये मास है और इस पे जो भी वेट्स हैं इसके और इर्द गिर्द, मैंने कुछ बदला नहीं है, तो मैंने उसका ज्योमेट्रिक सेंटर भी नहीं बदला. ये तो जो एक्ट कर रहे हैं ये तो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, है ना. मेरा जहाज पानी में रहता है, मेरे को एक्सटर्नल फोर्सेस विंड करंट मारते रहते हैं, मेरा केजी नहीं बदलता. Maybe they considering so this a transfer of weight taken by the block, but it is not actually. It is a transfer of the weight by the block. बिल्कुल ठीक. It is a transfer of the weight by the block. So a weight is getting transferred from the vessel to the block gradually. But that is the virtual, no sir. That is not actually transferred. That is actually kg not yes, so that's why kg is constant. Kg is constant. Therefore, Km is changing because of the water line. Therefore, the loss of Gm is called as a virtual loss of Gm. Now, where else have you heard of a virtual loss of Gm? This term. So, free surface effect, sir. Absolutely right. Free surface effect. तो मेरा जहाज जो है वो रोलिंग कर रहा है. ये अगर इसमें स्लैग टैंक है, फ्लूइड है, it is liable to shift. And because it is liable to shift, therefore the Km can fluctuate due to the kg fluctuation. Excuse me, sir, your voice is not clear. Someone mic is on. Please put your mics on mute. Anshu Kumar, please put your mics on mute. So we know of virtual loss of GM occurring due to free surface. Any other instance of virtual loss of GM you know? By loading heavy lifts, Loading heavy lifts. While loading any lift, for that matter, any cargo, crane operation, derrick operation, the moment you plumb the cargo, the G shifts to the crane head or derrick head. The G of the weight shifts to the crane. This thing. So a virtual loss of GM occurs during that transition period while the crane is swinging the weight and picking up from the jetty to the place where it is going to land in the hold. That's called as a virtual loss of GM. The weight is still on board, is actually on board, but it is in transit the moment the crane has picked it up. But the G is getting transferred from the jetty, the weight, it has got transferred to the crane head, and from the crane head, when उसने hold में डाल दिया, the weight goes down, the G goes down to the weight. So all this transition is happening. ये virtual loss of GM है, correct? Yes, sir. So all these are virtual loss of GM. तो ये आ गया एक और virtual loss of GM. ठीक है? Is that okay? Yes, sir. So in waterline 2, write down virtual loss of GM commences. The GM will constantly keep losing. Therefore, the GM which is remaining will keep on reducing.
So the residual GM will decrease. Do you agree to this statement? Yes, sir. Okay. Now, as the waterline falls, P will increase. The virtual loss of GM will increase. And if virtual loss of GM increases, the remaining residual GM will keep decreasing. Agreed? Yes, sir. Okay. Some So waterline. this residual GM. Yeah. Go ahead. Sir, what is this residue? I didn't get it. Residue. Is residual. So GM initial, supposing minus the virtual loss, will give me the remaining GM, the residual GM. Oh, okay, so sir. if my initial GM is 1 meter, supposing my virtual loss of GM is 0.25 meter, then what is my remaining GM? 0.75. Supposing my GM initial is 1 meter, my virtual loss of GM is 1.25 meters. What is my residual GM? Minus 2.5. Minus 0.25. Yeah. Agreed on this? Yes, sir. What will be my situation at this time? I am aft, touched, forward, not yet touched, still in the air, and I have got a negative GM. I am unstable. What will happen? The vessel will topple over. Agreed? Yes, sir. This Yes, sir. is the criticality of the critical period. I don't want this to happen. Hence the name critical period. When does critical period occur? From 2 to 3. Yes, sir. So I don't want my residual GM to become negative between 2 and 3. Yes, sir. So what do I want? At waterline 3, my residual GM should be positive. That means my residual GM should be greater than 0. That is what I want. If my residual GM, I want it to be greater than 0, that means I want it to be stable. I want this to be positive. My virtual loss should be less than GM initial. That means my virtual loss should be less than 1 meter. So long as my virtual loss is less than 1 meter, my residual GM will always be positive. Yes, sir. Since my residual GM is always positive at waterline 3, I'm okay to dry dock. Yes, sir. So at waterline 3, my RGM or residual GM should be positive. ये एक मेरी condition है. So this is the biggest challenge for the mate to check RGM at waterline 3. अगर ये positive है, okay to dry dock, no problem. Is it okay? Yes, sir. Right. इसके बाद ड्राई डॉक फिर पंप आउट करता है थोड़ा सा पानी. जैसे ही थोड़ा सा पानी और पंप आउट करेगा 3 के बाद, ये वर्चुअल लॉस और बढ़ेगा, आरजीएम और घटेगा. एक टाइम आएगा जब वर्चुअल लॉस विल बिकम इक्वल टू जीएम इनिशियल. Yes, sir. That water line is called as water line number 4. So at waterline number 4, the residual GM will become equal to 0. Virtual loss of GM will be equal to GM initial. Supposing 1 meter, तो 1 meter. Is it okay? सर एक बार नंबर 4 फिर से समझा दीजिएगा. Number 4 फिर से. Okay. So 3 पे मेरी RGM positive थी, right? Let's say positive 0.25. Supposing. So I was okay to dry dock. अब उसके बाद जब पानी और नीचे गया तो वर्चुअल लॉस और बढ़ा. वर्चुअल लॉस और बढ़ा तो आरजीएम और घटा. सो आरजीएम 0.25 से 0.20 हो गया. फिर मैंने पानी और डाउन किया, फिर 0.15 आया, फिर 0.1 आया, फिर 0.05 आया. एक टाइम आएगा जब आरजीएम 0 हो जाएगा. दैट इज वाटर लाइन नंबर 4. आरजीएम इज 0. दैट मीन्स द वर्चुअल लॉस ऑफ जीएम इज इक्वल टू द इनिशियल जीएम. वी लॉस इज इक्वल टू initial GM was 1 meter, so virtual loss is also 1. RGM is 0. This will be waterline number 4. RGM is 0. Sir, अभी number 4 पे all blocks already touched or not yet? Already touched. वो 3 पे टच कर गए थे. 3 पे टच कर गए थे. P बढ़ चुका है. Waterline 4, P4 is greater than P3. Bravo 4 is less than Bravo 3. Trim is 0. वो पहले ही हो चुकी थी. Draft forward will be equal to draft off, will be equal to dock water height, will be equal to hydrostatic draft. अगर इनमें से मुझे कोई भी एक चीज मिल गई तो मुझे बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं. Displacement remaining constant. W4 is equal to W3 is equal to W2 is equal to W1. Displacement throughout this entire process is constant. Kg is constant, not changing. Is this okay? Yes, sir. Any doubts up to waterline 4? No, sir. ओके. अब इसके बाद ड्राई डॉक फिर पंप आउट करता है. तो जैसे ही 4 के नीचे जाएगा पानी, वी लॉस बढ़ेगा, आरजीएम विल बिकम नेगेटिव. Yes, sir, correct.
Yes. So she'll become unstable. Yes, sir. But she's already sitting all over in the blocks. So it is okay. She won't topple over. This is what we wanted to achieve. No, sir. One topple. This is what we wanted to achieve. We wanted she to be seating all over on the blocks when the GM becomes negative. We wanted to achieve that. So sir, number 4 पे it is sitting on in the all the blocks. Correct. तो GM पॉजिटिव था, तो हम तो ऑलरेडी पहले से सेफ पोजीशन पे हैं. हाँ, वो 3 से ही शुरू हो गया था, हम सेफ पे आ गए थे. 3 हम I wanted to achieve 3 first. 3 में पॉजिटिव हो गया था, मैं I was okay. So this is the sequence of my dry docking. I should go from 1 to 2 to 3 to 4 to 5. So after 4, the GM will become negative. RGM will remain negative. And as the waterline keeps falling, it will become more negative. My question to you is... Sir, किसी का mic on है sir. My question to you is, at waterline 5, what will be the RGM? What will be what, sir? Sir, it will be negative. The RGM at waterline GM will 5. be negative, sir. RGM is negative there already. हाँ, negative हो गया 4 पे के बाद. अब ये बढ़ता गया. Yes. बढ़ता गया. Yeah. बढ़ता गया. बढ़ता गया. नेगेटिव में बढ़ रहा है. ओके. अब 5 पे आया. तो 5 पे क्या होगा? Sir, it will be same as kg initial, but negative. Initial 5 meters. Already हट जाएगा because so everything is out and water is out, everything is out. So what will happen? Minus 5 meters, sir. No, something else. So at waterline 5, there is no buoyancy. It will be 0. Since there is no buoyancy, M vanishes. M will vanish. So therefore, GM vanishes. Vessel will only have kg. ये समझ में आया? Yes, sir. So it is like this vessel lying on this table like this. That's all. This vessel has a certain kg right now. Okay. I put this in the water. It will have a km also. And therefore this vessel will have a GM. I take it out of the water. She doesn't have any GM. Because there is no km. मैंने इसको table पे रख दिया. खाली kg है बस इसका. ठीक है? Is that okay? Yeah, this is okay, sir. हाँ जी. Now any doubts? Sir, again, if we start filling water at dry docking, after dry dock, so again it will start from negative, go to positive. Absolutely right. अब reverse. जब हम flooding करते हैं, जब हम sail out करना है, तो what will happen first? 5 आएगा waterline, फिर negative होगा, फिर 4 आएगा, 4 पे RGM 0 होगी, फिर 4 के बाद ऊपर चढ़ेगा पानी, ठीक है? चढ़ेगा, GM positive होगी, waterline 3 आएगी, and bow will be about to lift off. And जैसे ही lift off कर जाएगा, फिर trim बढ़ती जाएगी, और एक time आएगा जब aft भी lift off होने वाला होगा, तो waterline 2 आएगी, and then 1, and then the vessel will sail out. Therefore, we do not carry out any bunkering or any fresh water intake or anything inside the dry dock. We always do it at the anchorage. Why? Because जिस condition में, जिस trim में मैं अंदर गया, उसी condition से मैं बाहर भी निकलूंगा, ताकि critical period वही रहे. That is the reason. Okay sir. Sir, ये जो number 5 आपने बोला है, KM, so GM also vanished. So GM is completely reliable on the KM only. That's right. Whenever so long as just you have for calculation. So long as you have a M, and the M is only there for floating bodies. Yes, that's why GM is appearing because of the M only. Correct. Sir, regarding bunkering, you just said that we don't take any bunker. Sometimes we go in a dry dock with the minimum ballast. The vessel requires some minimum ballast, so we go in the dry dock with that much amount of water, and that much we also drain because all the tanks are inspected and everything is done. So is it required that while coming out also we should have that ballast, that much amount of ballast? बिल्कुल. So that is the reason why जब drain plugs डाल देते हैं, उसके बाद में वो load on top करते हैं. वो the ballast, the dry dock gives us a pipe to load from top, because हमारे pumps तो सारे के सारे काम ही नहीं कर रहे होते उस वक्त, तो इसलिए हम load on top करके उतना ही पानी लेते हैं. So अगर मेरे 4 peak में 1000 टन था, तो 1000 टन ही वापस लूंगा मैं 4 peak में. Yeah, but we have seen sometimes, because this is paid, so sometimes the company wants to save money, they don't take. You have to insist. There's no other way. Okay. You just cannot. You have to throw your weight on that. You have to insist as a mate. Sorry, I am not taking. आप ले लीजिए जो करना है. But मुझे तो 1000 टन चाहिए, क्योंकि critical period change हो जाएगा. अगर आपने 1000 टन नहीं लिया ballast, तो जब lift off का time आएगा, आपने तो calculation अंदर के लिए जाने के लिए कर दी थी. बाहर जाने के लिए क्या करोगे? Yes sir.
your entire critical period will change. Okay sir. तो ये बड़ा इशू होता है. सर अगर ये 10-12 दिन अंदर रुकेंगे एंड ये फ्रेश वाटर कंजम्पशन का फिर क्या करेंगे सर? तो इसलिए जहाज पे तो कुछ कोई पंप काम ही नहीं कर रहा होता, इसलिए द ड्राई डॉक प्रोवाइड्स यू विद all the shore facilities. They provide you with shore connection, they provide you with everything. That's why. सर जब ये रिफ्लोट करेंगे तो ये बॉडीली लिफ्ट होगा कि बाव पहले लिफ्ट होगा सर? जब ऑपरेशन कर रहे हैं, यस सर, तो पहले बाव लिफ्ट ऑफ होगा, क्रिटिकल इंस्टेंट पहले आएगा. ओके सर. राइट, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ट्रिम इंक्रीज करती रहेगी, फिर एक टाइम आएगा जब आफ्ट लिफ्ट ऑफ करेगा. शी विल नॉट लिफ्ट बॉडीली, पहले बाव ही लिफ्ट. वो तो रिवर्स वैसे ही उल्टा चलेगा. ओके. जैसे जाएंगे वैसे ही रिवर्सली उठेगा. बिल्कुल जैसे जाएंगे वैसे के वैसे ही रिवर्स होगा. Sir, I just have one request. Sir, can you please repeat on that how this virtual loss of GM started? Just that point. Can you just? So virtual loss of GM started because my water line is changing between 2 and 3. Yes, sir. My water line is changing. So and the draft is changing also between 2 and 3. Yes, sir. So because my draft is changing, my KB is changing. Yes, that's correct, sir. So because my KB is changing, my KM will also change. Because Yes, KB sir. plus BM is equal to KM. Yes, sir. So KM will change. KG is constant. Yes, sir. So GM will change. Okay, sir. Okay. That is the virtual loss of GM. That is the virtual loss of GM. Okay, sir. Okay. Sir, at point 3, Yes, thank you, sir. we have to keep this GM positive. Yes. So we have to, जब सर कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें बैलास्ट उस हिसाब से डालेंगे कि जो भी अपना पी और सब कैलकुलेट करके कि एंड में पॉजिटिव है. बिल्कुल ठीक. यही मेरे को, ये मेरा वो है जो मुझे रोक के रखता है. ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. If we enter and exit the dry dock with the same trim, तो जो ब्लॉक्स है नीचे सर उनका लेंथ तो डिफरेंट रहेगा ना सर? फॉरवर्ड के लिए थोड़ा लंबा रहना चाहिए ना सर? लेंथ मींस व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ? The height of the block. So in reality the height is different, okay, but abhi to begin dry docking I am assuming that all the heights are the same. In reality the heights vary. Yeah, okay. As per the ship shape, sir, no sir. As the ship shape. As per the ship shape. बिल्कुल सही. ठीक है. All right. See you tomorrow then. All right. Bye. ओके सर.